with all the stars. So you know you're not too far away from me. You're in light when it's my dark. I know this distance makes it hard for us to see. I've been waiting so long, I've been waiting so long, just to see you. I've been sleeping alone. गुड इवनिंग भाई लोग, कैसे हो सब। तो आज मैं हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? म्यूजियम घूमने के लिए, एविएशन म्यूजियम। तो मैं श्रवण, मैं हूँ आसमा, मैं हूँ रिक्की, मैं हूँ खुशी। तो हम सभी जा रहे हैं आज एयरपोर्ट म्यूजियम। यहाँ पे काठमांडू एयरपोर्ट के पास में ही है। हाँ। तो देखते हैं वहाँ पे क्या कैसे है और दिखाता हूँ आप लोगों को। बने रहे वीडियो के अंत तक। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत और शेयर भी करना। पहुँचने वाले हैं, अभी आ गए हैं यहाँ पे। तो ये इधर है, हाँ रोड पे चल रहे हैं। तो ये रहा एंट्री गेट, मेन है ना, यही है से एंट्री करेंगे और अपन लोग चलते हैं यहाँ से। पूरा रोड जेब्रा क्रॉसिंग पे आगे, यहाँ से जेब्रा क्रॉसिंग पार करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सो फाइनली एंट्री कर गए अंदर। और क्या दिखाएंगे आज आप स्पेशल? सबसे पहले मैं यहाँ अंदर ले जाऊंगी आप लोगों को। ये जो एविएशन म्यूजियम है, यहाँ अंदर जाकर यहाँ किसने बनाया है, ये कब बना है, ये इसके अंदर क्या है, यहाँ अंदर क्या कौन कौन चीज़ रखा है, मैं वो सब आपको बताऊंगी। पहले सबसे पहले हमें वो वहाँ पर एंट्री कर अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है तो भाई, तो चलते हैं। भाभी गाइड करेंगी है ना, तो अपने को ज़्यादा आज बोलना नहीं पड़ेगा। सो फाइनली एंट्री कर रहे ऊपर। Tonight is a nice atmosphere, new fresh air. We going out, hanging out like we don't care. We are new honey party people, ladies, they better get dressed. Like good vibes in our minds, ain't nobody feels real. I like you good, bad boy. I know you like how it feels. A little spice could be sweet when you know. सो भाई कितना अमेजिंग है, देख लो। पहली बार आया यार किसी केबिन में फ़्लाइट के। ये भी फ़्लाइट जो है उड़ने वाली थी, बट इसको जब ख़राब हो चुका है तो इसको म्यूजियम के तौर पे रख दिया गया यहाँ पे। तो ये देख लो, सीट, चेयर, यहाँ से उन्होंने दिखते सारा कुछ। तो भाई ये बहुत यूनिक पीस मेरे लिए तो है। और ये सारा उसका सेटिंग वगैरह होता है। हाँ, यहाँ का डिटेल जो है ना, वो हम लोग स्क्रीन पर दिखाएगा। वो बोल रहे नेपाली से देखेंगे, इंग्लिश से। इंग्लिश वाला लाई थी ना। सो इसके माध्यम से इसके बारे में सारा कुछ बताएंगे, देख लेंगे। The imaginative conversion of this Airbus 330-300 aircraft into Kathmandu's Aviation Museum is the brainchild of Captain Beth Upreti. His inspiration is former US President John F. Kennedy, who once said, "Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country." New York's main airport, JFK, is now named after him. Captain Upreti has flown various aircraft types in his native Nepal, as well as in India, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Oman, Cyprus, Italy, France and the USA, as well as visited over 80 countries. In 2012, he bought a decommissioned Fokker 100 aircraft, transported it in pieces to reassemble it in Dhangari in far western Nepal, to set up an aviation museum as a tourist attraction in the region. Museums can be a major draw for visitors around the world. In fact, some destinations can attract millions of tourists just because there is a famous museum located there.
This aircraft had only flown for about 8 months and suffered a runway excursion incident at Kathmandu Airport in 2015. It was difficult to extricate the huge plane from the runway, and the airport was closed for 4 days. Captain Uprethi used to see the aircraft parked at Kathmandu Airport every time he flew in and out, and dreamt one day to acquire the plane to set up a museum in Kathmandu, as well as to serve not just as a tourist attraction, but also educate students about aviation. Namaste, this is Captain Uprethi, and I welcome you all to the Aviation Museum inside this Airbus A330-300. We are at an altitude of 4,400 feet above mean sea level, and we now begin our journey. You don't need to fasten your seatbelt on this flight, just relax, enjoy the pictures I have taken from the air and under the sea, and you can also take photographs of the aircraft models on display here. There are 7 sections to this aircraft, and we are now in the welcome hall, where you can watch a short documentary about the origin of this Aviation Museum, a model of the first ever powered flying machine made by the Wright brothers in 1903, the glass cockpit of an Airbus A330, and miniature models of planes. This is the Airbus A330 glass cockpit. The captain is on the left and the co-pilot or instructor is on the right seat, and you can see thousands of instruments, and this is the latest cockpit of the latest Airbus A330. In the Air Force Hall, there are models of warplanes as well as replicas of the latest Airbus 380 as well as Boeing 777. There is also a painting of God of Sky, Akash Bhairav, in this hall. The airline hall is next, and it has models of airliners from the first ones to the latest aircraft. The Nepal Aviation Hall also has models of planes that had flown in the skies over Nepal, from the Dakotas to the newest Airbus A330 of Nepal Airlines. You can also see a slideshow of rear photographs of aircrafts flown in Nepal during 1962 to 1975. The 5th hall is in the tail section of this aircraft, and that is also where the refreshment hall is located, where miniature aircraft models made by Nepali students are also on display. In the lower deck of the plane is the Humla Hall, where you can see a documentary on aviation, and the place is also open for the refresher class and conference. The museum office is located in the captain's hall. This museum is not only about the past and present, but it is the museum of the future as well. The main goal of this museum is to inspire, encourage and motivate students in their future careers of their interest, and to make a new and an interesting tourist destination in Kathmandu. Your journey in this Airbus A330 Aviation Museum is 100% safe. If you have any queries, please do not hesitate to ask one of our museum attendants. We can also provide suggestions about making this museum more interesting. It took Nepali and international technicians 4 months to cut the plane into smaller pieces and transport it in trucks at night. It took another 9 months to reassemble it here in Sinamangal. This museum is made possible through a partnership between the Ved Uprethi Trust and the Civil Aviation Authority of Nepal. The project has been funded by Captain Uprethi's own savings, as well as a Rs 27 million loan from Everest Bank. The main objective of the project is to be an educational centre to arouse an interest among young Nepalis about aviation,
and to inspire students to take up careers in one of the world's fastest growing sectors. Grade 9 to 12 students from all over Nepal will be allowed free entrance if they have a letter from their schools, and other students can get a 50% discount if they come with IDs. Part of the income from the Aviation Museum will go to assist the Bedu Priti Trust, which has been funding treatment for cancer patients from the far west. It will also help the Aircraft Museum in Dhangadi and the statue of Siddhanath Baba being erected in Mahendranagar. Aviation Museum Kathmandu, with this huge converted aircraft, cockpit and air traffic control recording, its collection of aircraft models from the Wright brothers flying machine to the most modern plane, as well as the photo gallery of aerial photographs of Nepal, are all dedicated to the people of Nepal by Captain Bedu Preti. Finally, I would like to request all Nepalis in Nepal and abroad to devote yourself to lifting our motherland through creative and social activities in any way you can. I wish you a very pleasant visit to our Aviation Museum. Thank you. Namaste. भाई बहुत ही अमेजिंग है यार, बहुत अमेजिंग। और कहीं भी जाना है, यहाँ भी घूमने के लिए एक बार ज़रूर आना। अगर आप स्टूडेंट हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और देखने को। इसके अंदर बहुत कुछ है, कैसे क्रू मेंबर्स, कैसे सारे बहुत सारे एयरक्राफ्ट मॉडल्स, नए नए पुराने, सारे कुछ इसमें अरेंजमेंट करके रखा गया है। सब कुछ देखने और सीखने को मिलेगा आप लोगों को, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इंग्लिश हिंदी में। तो आप इसको पढ़ के भी आप इस चीज़ को अपने आप को एक इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, अपने अंदर है नॉलेज बिल्डअप कर सकते हो इसके रिलेटेड, ठीक है। ये पूरा काठमांडू का मैप दिया गया है, तो भाई मैप से पूरा जानकारी भी ले सकते हो यहाँ पे, है ना। और वहाँ की बहुत ही अच्छी है, एक अलग ही एक्सपीरियंस मिला यार, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना है यहाँ पे। क्यों भाई? हाँ सही में, मेरा भी फर्स्ट टाइम है यहाँ पर भी, पर इतना अच्छा मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एवरीथिंग इज गुड, ओह माय गॉड, सो मेरा तो सेकंड टाइम। मतलब दुनिया के जितने भी मतलब अभी तक का एयरक्राफ्ट या फिर एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट जितने भी है ना, सबका मॉडल यहाँ पे दिया गया है। वो सारा कुछ अपने देखने को मिलेगा यार, तो एक बार ज़रूर आना यार, मैं ये रिकमेंड करूँगा आप लोगों को।
left, had some time to self-reflect. So now तो भाई कैंटीन भी है यहाँ पे, है ना, तो कुछ ले सकते हो, चाय कॉफ़ी नाश्ता वगैरह। I'm writing this to you. तो एग्जिट मोड आ गई है, ये सारा अपना कैंटीन का जो है अपना प्राइस वगैरह सारा कुछ है। keeping it quiet. I pull up, you know I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funding. सो गाइज फाइनली हम लोगों ने घूम लिया सब कुछ है ना, एंटरटेनमेंट फन वगैरह से जो भी था करना कर लिया है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा यार। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे ही कोशिश करता हूँ कि यार कुछ नया चीज़ें जो भी हो दिखाऊँ और अपना बेस्ट देता रहूँ। और अगर काठमांडू का भी मौका मिले आप लोग को आने का तो ज़रूर यहाँ पे आइएगा, है ना। और बहुत ही अच्छा चीज़ है ये घूमने के लिए। अगर आपको इंटरेस्ट है एयरक्राफ्ट वगैरह में, अगर आप उसमें जाना चाहते हो, उसमें जॉब करना चाहते हो, तो उस सब चीज़ों से रिलेटेड म्यूजियम है। तो म्यूजियम में आपको बहुत कुछ देखने और सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ आप स्टडी के तौर पे भी यहाँ पे प्रैक्टिकली देख सकते हो वो चीज़ें, ठीक है, जो आप बुक वगैरह में पढ़ते हो। तो ये चीज़ अच्छी है यहाँ पे। तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा और यूनिक लगा ये कहना। मैं पहली बार भी आया हूँ और केबिन वगैरह सब चीज़ में घुमा हूँ, कैसे क्रू मेंबर रहते हैं, ये सारा चीज़ विजिट किया हूँ। तो एक अलग एक्सपीरियंस था हमारा। क्यों भाभी, क्या कहेंगे आप? हाँ ज़रूर, मैं भी ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मौका मिलेगा तो ये अपॉर्चुनिटी मत मिस करिएगा। ये प्लेस ज़रूर घूमने लेगा। ये बहुत अच्छा है। आपने सोचा भी नहीं कि इतना अच्छा है, जैसे कि हम लोगों ने शुरू में नहीं सोचा था। आप लोग भी सेम वैसे हो जाओगे जब आप लोग यहाँ पर आएंगे। यही मैं कहूँगा, वीडियो देखिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।